दैट वाज इनिशियल मूवमेंट, ये इनिशियल मूवमेंट थी। एंड I want to request everyone, please make sure to subscribe my channel and please make sure to thumbs up the live stream as well. This was my point of interest. मैं इस बाय साइड लिक्विडिटी को उड़ता हुआ देखना चाहता था, मैं इसको इंगेज होता हुआ देखना चाहता था, लेकिन क्या ऐसा मार्केट ने किया? अभी तक इसने इस तरह का कोई क्ल्यू, इस तरह का कोई इंडिकेशन मुझे नहीं प्रोवाइड किया। तो मुझे क्या करना चाहिए इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन? व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू वेट, आई हैव टू सी एंड वेट कि मार्केट मेकर्स इसको किस तरह ग्रेविटेट करते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉप डाउन टू 1 मिनट टाइम फ्रेम और सब 1 मिनट टाइम फ्रेम। दिस वाज द बाय साइड लिक्विडिटी ऑन विच आई वाज इंटरेस्टेड। ये वो बाय साइड है जिसके ऊपर मैं इंटरेस्टेड था। लेकिन क्या ज़रूरी था या ज़रूरी है कि मार्केट इसी बाय साइड लिक्विडिटी तक जाए? ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था और हम अग्रेसिवली मूव अप कर रहे थे, तो हम एक डिस्काउंट, शॉर्ट टर्म डिस्काउंट के लिए भी ग्रेविटेट कर सकते हैं, जिसमें हम ये अग्रेसिवली नीचे आए हैं, ड्रॉप डाउन किया हमने इनिशियल रन में। नाउ व्हाट आई कैन look, I can see, does market offer me this from respect from this order block and go up? मुझे अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन होके देखना है, और देखना क्या है कि भाई ये मेरे पास फेयर वैल्यू गैप ज़रूर है, क्या मार्केट मेकर्स इस फेयर वैल्यू गैप में रिस्पेक्ट लिए बगैर क्या इसको अग्रेसिवली सेंड अप करते हैं, या फिर यहीं से ही सेल ऑफ हो जाती है मार्केट? दैट इज़ द थिंग विच आई हैव टू लुक। इसके लिए मैंने ये देखा कि एशियन लोज ले लिए मार्केट ने। व्हाट वी हैव, देयर इज लंदन लोज रिसाइड्स। माई इंटरेस्ट इज अपसाइड, माई इंटरेस्ट इज नॉट ऑन डाउन साइड। बट ये आप लोगों के लिए इन्विटेशन नहीं है कि आप ट्रेड करो इसको। मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि आप सेल कर लो या बाय कर लो। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज माइन इंटरेस्ट, यू डोंट हैव टू टेक एनी ट्रेड्स। ओके, दिस वाज द लास्ट रिमाइंडर। नाउ व्हाट आई वांट सी, मुझे ये इनिशियल रन जो है ये डूडा स्विंग नजर आया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये बाय साइड लिक्विडिटी दैट इज लुकिंग स्मूथ, दैट इज लुकिंग टू ऑसम टू मी, और एट लीस्ट ये इक्वल हाइज, दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो हमारे पास दो लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं, एक एक्सटर्नल है जो कि एक्सट्रीम एक्सटर्नल है, एक ये पड़ी हुई है। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, जो मेरा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो बीएसएल। तो इसके ऊपर आपने बीएसएल लिख लेना है। हर हाई, एक हाई हो मल्टीपल हाई हो, उसके ऊपर क्या होती है? बाय साइड लिक्विडिटी होती है। और ये जो दो रेड लाइनें लगी हुई है ना, ये जनाब 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, अगर आप गौर फरमाएं तो। दिस वन, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो। अब मार्केट मेकर ने इस हाई के ऊपर रीप्राइस जरूर किया है। दिस कैंडल्स लो एंड दिस कैंडल हाई एंड दिस कैंडल्स फेयर वैल्यू गैप, दिस शुड एक्ट लाइक व्हाट, इसको एक्ट करना चाहिए लाइक अ बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अब ये बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है? दिस इज एन डिटेल कॉन्सेप्ट, दिस टू मी इज डिटेल कॉन्सेप्ट। बट क्या ज़रूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को लर्न करें? दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप एक चीज़ को बार बार कर सकते हैं तो आप उसी को ही करना चाहिए आपको, रेदर देन यू हैव टू मूव टू मल्टीपल थिंग्स, हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स। मैं ये देख रहा हूँ कि क्लोजिंग के टर्मिनोलॉजीज में इसके बाहर क्लोज ना करे, अगर कर दिया तो इट कैन ग्रेविटेट लोअर, इट कैन गो लोअर, दैट्स फॉर श्योर। एंड माई डियर फ्रेंड्स, गोल्ड इज़ वन ऑफ दोज एसेट क्लासेस जो कि हाईली मैनिपुलेटेड होता है, इट इज़ हाईली मैनिपुलेटेड बाय द वे। लेकिन क्या ये है कि आप इसे ट्रेड नहीं कर सकते? डेफिनेटली यू कैन ट्रेड दैट एंड यू शुड प्रोबेबली, आप इसे ट्रेड कर भी सकते हैं और इसे करना भी चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन करना सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही चाहिए।
Yes, it closed outside that fair value gap, but लेकिन ये हमारे लिए क्या गलत था? This was not bad at all, because न्यूज़ थी हाई इम्पैक्ट, तो ये थोड़ा बहुत इस तरह मैनिपुलेशन हो सकती है, और ये इसने एग्जैक्टली कर दी है. नाउ व्हाट आई वांट टू सी कि ये इसके बाहर क्लोज करे, इस ब्लैक कैंडल के नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, इसके अंदर डिप इन करे, बेस्ट है, और देन रन अप कर दे, ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा. एग्जैक्टली यही सिनेरियो की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडल है ये अब रीप्राइस अप करे. दैट इज व्हाट दिस इज पीपीआर. PPR. What does it mean? It means balanced price range. Balanced price ranges मार्केट को किस तरह काम करवाना चाहती हैं? Balanced price ranges एक्चुअली होती क्या हैं? ये वो होती हैं जिसमें आपको मार्केट से अग्रेसिव रिस्पेक्ट चाहिए होती है इस स्पेसिफिक पार्ट से. और इसको इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो एंड स्क्रीन पे पेस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से. आई विल पेस्ट द वीडियो ऑन द एंड ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम, एंड यू कैन वॉच दैट एज वेल कि व्हाट आर बैलेंस प्राइस रेंजेस और उनके कॉन्सेप्ट्स किस तरह के होते हैं और वो कितनी टाइप्स की होती हैं. दैट्स फॉर श्योर. इफ़ यू आर वाचिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू थम्स अप द लाइव स्ट्रीम. और that's my time. Some live streams and some videos of my channel, you will learn a lot of stuff. Now, this is not good. It should need to go up. I'm not forcing my will. I'm not forcing. I can be wrong. I admit that. मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि this specific thing need to act like a balanced price range and it should go up. Otherwise, in next 1 to 2 minutes, it can go down. अगर ये यहीं से मूव ना किया तो it can go down easily. Let's drop down 3 minute, 5 minute, and look what we have. For one, let's move to 1 hour time frame and look closely. What we are doing, what we are anticipating, what we are hoping for. My dear friends, if you move to 1 hour time frame and you look, we are in a deep discount. क्या मार्केट यहीं से सेल हो सकती है? डेफिनेटली. कैन इट सेल फ्रॉम दैट पॉइंट? यस इट कैन, एंड गोज टू दीज रिलेटिव इक्वल लोस. बट if we have we have to think like a mature trader. This is a short term premium option for market makers. Market makers के लिए short term premium की option है ये buy side liquidity और साथ साथ ये fair value gap और ये fair value gap. तो it is pretty much chances are very healthy that it can gravitate to that buy side liquidity. It need to gravitate. So ताकि ये शॉर्ट टर्म प्रीमियम भी बन जाए. किस लिहाज से बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्रीमियम की? आज सुबह की लाइव स्ट्रीम में भी ये बात करी थी कि इस फिब को अगर आप यहाँ से यहाँ तक मेंशन करें, एक्सटेंड करें, तो दिस इज द 50% इक्विलिब्रियम पार्ट. So it can reprice to that and then go lower or keep going higher. That can be a case as well. If you are some foreigner like Canadian trader, let's move to 5 minute time frame and think once again. The market is steeped. What does it mean? It means what? It means it is indicating me that it is not willing to go up. So what I am doing right now, if I have trade on, I will close it right now. Why? Because the market is not showing me any sort of aggression above that balance price range. Does it an indication to take any sell trade? But I am not willing to. Sell stops took buy side upside. हमने buy side को भी engage कर लिया है. What's left this pool of sell side liquidity? But because we are bullish, we are not bearish, so I cannot take any sell trade in this sort of scenario. So it is better for me and everyone to sit still and wait for the perfect opportunity to happen in front of us.
Now, can next candle open, dig into that, and then go higher? हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, वी नीड डिस्प्लेसमेंट फॉर बिजनेस. That is very crucial for our entries, for our trading, for journey. By the way, that's my interest: buy side liquidity or some sort of buy side liquidity above the marketplace as well. Remember, this is a 3 minute time frame. To become a profitable trader, what you require, you need uh, smart thinking. You don't need panic. You don't have to think someone else about your business. अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री में नंबर वन रूल ये है कि आपने अपने बिजनेस की खुद परवाह करनी है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट समवन एल्स बिजनेसेस. यू डोंट फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल. दैट्स फॉर श्योर. इसका कलर मैं वाइट लगा रहा हूँ जी. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक. तो इधर मैं ओ बी पॉजिटिव मेंशन भी कर रहा हूँ. यस, आई एम बिट जूम्ड इन. मैं थोड़ा सा जूम्ड इन ज़रूर हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा. और एक्चुअली व्हाट्स माई डाउन लिक्विडिटी? दैट इज़ माई डाउन लिक्विडिटी, दिस बाय साइड लिक्विडिटी एंड दिस बाय साइड लिक्विडिटी एज वेल. एक और चीज़ यहाँ यहाँ पे मैं शामिल हाल करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने. वन मोर थिंग विच आई वाना ऐड इन फ्रंट ऑफ दिस लाइव स्ट्रीम, that if you have any clear direction like buy side liquidity, अगर आपके पास कोई buy side liquidity टारगेट में है और मार्केट मेकर्स मतलब मार्केट बुलिश है, so don't worry, take trade in the higher time frame direction, don't take trade in the lower time frame direction. Or like if you think like that, this is a 1 minute time frame, we have market structure shift, fair value gap, take sell. No, wait and look for at least 15-minute time frame. What market is telling us? Is it indicating that we have any fair value gap in discount or some sort of that situation? If you have any fair value gap, in this scenario we have fair value gap like 15 minutes fair value gap, and you can see we repriced lower to the opening of order block, and now we are closed above that. What it is suggesting me, it is suggesting that it is bullish. It is not bearish at all. We have bunch of buy side liquidity above the marketplace, and we have market structure shift as well. So what I am hoping that buy side liquidity must need to be tagged in terminologies, because we have this fair value gap as well above the marketplace, which is CB, sell side imbalance, buy side inefficiency. So it should go up to clear buy side, as well as for short term premium at least to go down. यानी इसे ऊपर जाना है इस फेयर वैल्यू गैप में, जिसका कलर अब मैं रेड कर रहा हूँ, लाइट पिंक सा. शॉर्ट टर्म प्रीमियम भी क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ साथ वो बाय साइड लिक्विडिटी भी इंगेज हो जाएगी. ओके. or some sub 1 minute time frames, lower time frames like. Now I wanna, now I need speed and magnitude towards my direction of trade. I am not pushing any buttons, by the way. I'm just studying with all of you guys. Okay. If you glean some knowledge from my YouTube channel, please make sure to share it as well. अगर आपको यहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा मिले इस लाइव स्ट्रीम से या मेरी यूट्यूब की किसी भी वीडियो से, तो आप उसको शेयर लाजमी किया करें दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब मस्ट कर दिया करें यार. मैं देख रहा था लॉट ऑफ पीपल, सो इट इज़ जस्ट लाइक अ चीटिंग माय डियर फ्रेंड्स.
No, I really need speed because this buy side liquidity is looking too smooth. This one as well. क्या ये इस बाय साइड लिक्विडिटी तक ही जाके स्टॉप कर सकती है? इट कैन, बट इट इज वेरी मच ओके टू गो अप टू अटैक दैट बाय साइड और above the marketplace which we have buy side as well. That is something for which you must have to take notes on. Notes इसलिए ज़रूरी हैं. This is the very crucial moment for your studies, for your journal. This is a pair. This is a one of pair which is not forex. जब ये मूव करता है, when it moves really really clean. When it stucks a lot. This is one of the pair which moves very volatilely, and this is one of the pair in few days when it stops hard. In Urdu, I'm replenishing once again what I just said. ये वो पेयर है जब ये निकलता है, when it speeds up lot, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है. When it stops moving, it stops like a donkey, if I'm not wrong. जब ये रुकता है तो ये गधे की तरह रुकता है, और जब ये चलता है तो फिर ये it really moves like electricity, by the way. And I wanna see electricity move from that point. Now actually macro time also in play. 8:50 से 9:10 तक मैक्रो टाइम होता है. Watch that. At that moment where I am just राउंडिंग अप माई माउस कर्सर, यहाँ मैं माउस को घुमा रहा हूँ, यहाँ 8:49 और 31 सेकंड में 8:49:34 एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू यूएस लोकल टाइम what I have in front of me, and you must have to be on US local time. In next macro start and it gonna end at 9:10. 20 minutes macro, it it available to every US trader or every outsider trader every single day for 20 minutes. What it means a lot to a skillful trader. स्किलफुल ट्रेडर के लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, मार्केट मेकर्स मार्केट को रीप्राइस करते हैं किसी फेयर वैल्यू गैप की तरफ या किसी लिक्विडिटी की तरफ अग्रेसिवली. नाउ मैक्रो स्टार्टेड. 3 minutes. Look how I'm shuffling my time frames as well. 5 minute. ये M15 का BC है, रिमेंबर डैट. तो इसका अब मैं स्टाइल जो है उसको चेंज करने लगा हूँ. ये ले. And it also gonna change by me because I wanna make a clear contrast. My dear friends, if you are believer of algorithmic theory, then you can learn a lot of things. But if you don't believe in algorithmic theories, then you will regret in later time. It's gonna happen for some persons after a lot of years, for some persons after few months. It really gonna happen. But I'm not demotivating you. If I have to demotivate you, then I will not be doing live streams, and then I will not creating powerful knowledge for my dear community. If you have any question, ask me in the live chat. I'm looking at it for next 2 minutes. Now I need speed.
यहाँ पे फर्स्ट पार्शल आएगा वाइट वाली पॉइंट पे, एंड फ्रॉम वेयर आई एम लॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट. Where is my stop loss? My stop loss is at that point. And where is my TP? My TP must at that point, but I can take partials round the corner all over the place. और क्योंकि मेरी कैंडल्स का कलर ग्रीन है तो मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट के लिए इसको ब्लू कर दिया. This is an order block as well. I need displacement. If it does not give me, I will kill my trade in that fair value gap. Remember, this is the upper end of 15-minute BC, which I just highlighted few moments ago, and also the order block 845 candles. Especially if you use forex.com broker for your analysis, then you will find it very easily. I have named it. This is the exact candle of 845. ये 8:45 की एग्जैक्टली कैंडल है जिसका 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे forex.com के ब्रोकर पे ये. Because we have war around the corner, the war in between Israel and Gaza, and especially Iran stepped in inside. So what I am expecting volatility, lot of volatility, lot of wildness in the marketplace in coming weeks, in coming days. So be aware of that as well. If you don't have any hopes, if you don't have any edge, any animosity about the marketplace, so don't trade it. Please don't trade it. If you don't have any sort of experience, this is an fair value gap. Market can reprice to that as well, and then can go up. This is not balanced price range right now. This is BC, buy side imbalance, sell side inefficiency. अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं एक न्यू ट्रेडर की कि यार पहले तो ये बीपीआर था, बीपीआर यहाँ से था, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के फेयर वैल्यू गैप के दरमियान यहाँ बीपीआर था, नॉट एट दैट पॉइंट. So for a moment I am removing this, and I have clear interest in that point, this one, OB along with BC. I want to see silver as well. Silver moved up. What I want to see gold to go up as well. मैं गोल्ड को भी यही करता हुआ देखना चाहता हूँ जो सिल्वर कर रहा है. बट गोल्ड इज लिटिल बिट सिली राइट नाउ, बट आई एम looking at the marketplace with my some sort of experience. So what I am expecting right now, I'm thinking like this. We need close above the marketplace. हमें 9 o'clock की कैंडल की ओपनिंग से पहले पहले मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर या इससे ऊपर चाहिए. If it happens, then I can cleanly see this buy side or buy side get taken. Rid of your fears is the simplest thing. If you backtest a lot, for overcoming fear, you have to backtest. You really have to backtest.
because now a lot of people are watching. If you have any question, ask me in the live chat. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क मी. This is a indicator which is telling me this is a fractal low, this is a high, this is some sort of highs. That's it. As I mentioned earlier, as I stated earlier, this is the one of where which when it moves a lot. When it stops a lot. So you have to overcome that as well. In some days it is very clean. कुछ दिनों में ये बहुत clean होता है. In some days it is very silly, like today. But I'm expecting in next 3 to 4 minutes it should really move on. If it won't, I will stop expecting any positions. अगर ये अगले 4 से 5 मिनट में भी इस पार्शल, जो फर्स्ट पार्शल है मेरा, इस तक भी नहीं ना पहुंचता 9:05 तक, 9:05 तक, अगर ये यहाँ पे नहीं पहुंचता, तो फिर मैं अपने माइंड में कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर लूँगा कि भाई आज मार्केट मूव नहीं कर रही. सो बेहतर यही है कि भाई साहब आज ट्रेड ना लें और आज रिलैक्स कर लें. लेकिन अगर इसने ऐसा कर दिया तो फिर हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी अगले 5 से 7 मिनट के अंदर. इसको एटलीस्ट इस वाइट बाय साइड लिक्विडिटी को, जिसके ऊपर मैंने फर्स्ट पार्शल मेंशन किया हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो, मैं नहीं देख पा रहे थे तो मैं अब इसको राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाएँ. और इसका कलर भी मैं ये लें फर्स्ट पार्शल, अब तो आप लोगों को नज़र आ जाना चाहिए क्लियरली. दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, दिस इज़ व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग. 9:05 in next 5 to 6 minutes at least go above that first partial to go to attack buy side, or this buy trade will be closed for today, at least for today. There we go. We need momentum, and there we go. We find it. We got it. We got it with a big bang, baby. We got it. But don't get too skinny, too stumpy about that, because it is the everyday routine. It happens a lot. It happens every single day. एक्साइटमेंट उस बंदे को होती है जिसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो बाय द सडन वे हो गई है, या जिसको आप कह लो अचानक से हो गई है. हमें तो पता है व्हाट वी आर डूइंग. इफ यू हैव एन सॉलिड मॉडल, देन यू नो एग्जैक्टली what you are expecting from the marketplace and what it is presenting to you. ये दोनों बातें ही पते की और क्रूशल हैं, याद रखना है आपने. बहुत पावरफुल, ये सुपर पावरफुल है बात. ठीक है जी. दैट इज वेरी वेरी क्रूशल फॉर योर फ्यूचर स्टडीज. You also have to have a great internet source as well if you are a scalper initially. That is very important. Now